नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एससी impleads नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन पर्सनल लॉ केस। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स व्यूज ऑन पॉलीगमी एंड निकाह हलाला। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस सीकिंग द व्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ऑन क्लच ऑफ प्लीज डिमांडिंग अ बैन ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगमी एंड निकाह हलाला। ठीक, अकॉर्डिंग टू शरिया और Muslim personal law, men are allowed to practice polygamy, which means they can have more than one wife at the same time, up to total of 4. अगर निकाह हलाला की बात करें तो it is a process in which Muslim woman has to marry another person and get divorced from him before being allowed to marry her divorcee husband again. ठीक, our next important headline is केरला पासिस बिल ऑन लोक आयुक्त। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल, व्हाई इज इट बीइंग अपोज्ड। वी आल्सो हैव टू नो अबाउट द लोकायुक्ता एंड जुरिसडिक्शन। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे किया है और लिंक मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर हम इस बिल की बात करें तो अमेंडमेंट्स वेयर रिलेटेड टू कंपीटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर लोकायुक्त रिकमेंडेशंस। जो इसकी मेजर अमेंडमेंट्स हैं क्या है वो, इन केस ऑफ एनी अनफेवरेबल डिसीजन फ्रॉम द लोकायुक्त अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर द competent authority will now be legislative assembly instead of governor in the existing act, and in case of MLA speaker will be the competent authority, while in the case of ministers the chief ministers will be the competent authority, and the competent authorities will also now have the option to either accept or reject the lokayukt recommendations. ठीक, अब इसकी opposition क्यों है अभी? It is stated that amendments were against the principle of natural justice by which no one should be judged in their own cause, and amendments are clear case of encroachment of power as it has handed over the power of the judiciary to the legislative and executive. ठीक, our next important headline is pledges from Red Fort, pledges by every Indian। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द 5 pledges for 2047 outlined by the Prime Minister of India, what kind of developed nation do we want to be, and key analysis and way forward। ये आर्टिकल क्या हाइलाइट कर रहा है? As Prime Minister on Independence Day outlined 5 pledges to focus on। कौन सी हो? Making India a developed nation by 2047, removing all traces of colonization, taking pride in our roots and heritage, unity and integrity and sense of duty among citizens। अब राइटर हाईलाइट कर रहे हैं कि these great pledges need much more clarity and broader national conversation to socialize and institutionalize for implementation। ठीक, our next important headline is एज ऑफ hyper-lapse consumerism। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। In this article, we have to know how has the notion of consumption changed, and we have to know about the modern day consumerism and future prospects। जो nature of consumerism है, it has seen tremendous shift from the hunter-gatherers whose consumption was survival-centric to the millennials for whom consumption is about fulfilling aspirations। Modern day consumerism is not only about the wanting more, but also wanting it fast। We are in the age of hyper-lapse consumerism and there is a clamor to be fastest to reach the consumer। अब ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ है? क्योंकि growth of internet and rise of e-commerce fueled the hyper-lapse consumerism, which refers not only to the kinds of products being sold but also to the ease with which consumers order them and speed at which such products are delivered। Going ahead, अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो देयर आर 2 पाथ्स। कौन से? आइदर वी कंटिन्यू विद हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म और शिफ्ट बैक टू मोर लेड बैक डिलीवरी मॉडल। इन दिस कंटेक्स्ट वी मस्ट एनालाइज इट फ्रॉम एथिकल, सोशल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, and both consumers and business should be mindful of the wide-ranging consequences of their actions, and 360-degree analysis of the business decisions must be taken for the larger good। Our next important headline is द ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन इराक। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द 2 डोमिनेंट शिया फैक्शंस ऑफ इराक अप इन आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, व्हाट हैज लेड टू द करंट डेडलॉक एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर इराकी पॉलिटिक्स। ये करंट डेडलॉक का रीजन क्या है? कि इराक हैज फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर अक्टूबर 2021 parliamentary elections in which Mr. Sadar's bloc won the most seats
A bitter power struggle between the country's dominant Shia parties have since then plunged the country into deepening crisis. ठीक. Our next important headline is चैलेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई आर द सेक्शन 6 to 10 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट अंडर स्क्रूटिनी, हाउ आर दीज प्रोविजंस बीइंग मिसयूज्ड एंड सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑब्जर्वेशंस. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट dismissed a writ petition challenging provisions of the Special Marriage Act 1954, which requires couples to give notice declaring their intent to marry 30 days before their marriage. जो writ petition थी, it has called the provision under the Special Marriage Act violative of the right to privacy guaranteed under the Article 21 of the Constitution, as they require couples to give a notice of 30 days before the date of marriage, inviting objections from the public. ठीक. Our next important headline is ए चैंपियन ऑफ द डाउनट्रोडन. ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट अभिजीत सेन एंड हीज कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो रिसेंटली अभिजीत सेन डाइड following a heart attack. He was one of the most distinguished development economists and teachers and policy makers. He was former member of Planning Commission and former chairman of Commission for Agricultural Cost and Prices. He is being remembered for his contributions in areas such as कौन से minimum support price, rural economy and rural employment. Our next important headline is वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स हाईलाइट पेंडेमिक परचेज चैलेंज. ये अवेलेबल है पेज नंबर 16 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ लेटेस्ट डिस्कशन पेपर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टाइटल्ड इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंज इनोवेशंस एंड लेसन्स. तो ये पेपर जो है it takes close look at the initiatives taken by the government of India to ensure sustained supply of essential medical commodities during the critical initial phase of the COVID pandemic, including efforts to develop local market following a whole of government approach. Our next and last important headline is huge haul of fake 2000 notes NCRB. ये अवेलेबल है पेज नंबर 16 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट. In this article, we have to know what are the findings of Crime in India 2021 report. So it found that nearly 60% of the fake money seized in 2021 were 2000 notes denomination. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. लास्ट में जाते जाते I would say कि it's better to fight for something than live for nothing. Thank you.